Good afternoon to all of you. Today we are going to discuss cement industry. All right. It is a basic industry. It is essential for several other industries. Just like iron and steel, it is also a basic industry. Without cement, other industry, construction, fabrication is not possible. So the most important role that cement industry has to play is in the construction of buildings, bridges, airport, dam, road, commercial establishments like bank, post offices, schools, etc. So the uses, we have learned the uses of cement industry. It is essential for construction activity and commercial establishment like bank, post offices, etc. So what are the ingredients or raw materials required to manufacture cement? Can anyone tell me what are the raw materials needed to manufacture cement? Maybe in chemistry also, maybe The in limestone. very good. We have noted down limestone, एक पत्थर है, चूना पत्थर, जिप्सम भी चाहिए, थोड़ा सिलिका भी चाहिए, एल्यूमिना भी चाहिए. So these limestone, silica, alumina, and gypsum, these are the basic raw materials necessary to manufacture cement. Once we make cement, then we can go for the construction of road, building, dam, airport, and commercial establishments. Fine. Let us know about the history of cement industry. The first cement plant was established at Porto Nova, Chennai in 1904. All right, first cement plant, Chennai, 1904. Was it independent India or British India? British India. So at that time, 1904, it was British India. British India. And British India, and cement production has begun in our country in Chennai. And some small scale industries, some township development, like Madras Presidency. It was a presidency of British rule. So buildings, offices, roads, houses, bungalows, etc. were constructed in Kolkata, in Bombay, and in Madras also. And the need for cement also increased during those expansion of their colonies. At present, there are 128 large cement plants in the country and 332 mini cement plants in the country. There may be one mark question or objective type question, so you can learn it. You should memorize it. 128 large cement plants and 332 mini cement plants in our country. Next, in the year 1989, after independence, we had brought many reforms in the industries. All right. So one such reform step that was taken was decontrol of price. The government will not interfere with the pricing mechanism of cement, and it should compete itself with the international system of cement pricing. सीमेंट का इंटरनेशनल मार्केट में अगर मान लो भाव बढ़ जाता है तो इंडिया में भी रेट चेंज हो जाएगा. अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट घटता है तो सीमेंट के दाम घट जाएंगे. तो इसको क्या किए हैं, मार्केट लिंक कर दिया गया सीमेंट को, और पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेडिंग होता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से सीमेंट का दाम बढ़ता घटता है, तो वो जो है गवर्नमेंट ने डीकंट्रोल कर दिया प्राइस पर. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री आल्सो वाज डन. इसका मतलब गवर्नमेंट जो है ये 128 और 332 जो है, ये इनमें से जो प्राइवेट ओनरशिप है या कोऑपरेटिव सेक्टर है या जॉइंट सेक्टर है, वो लोग धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है आगे बढ़ के आए. सब जो है 128 and 332, that many cement plants are spread out in our country. All right. तो इसका मतलब the need for cement is there throughout the country,
And we also intend to export it to Nepal or Bhutan or Bangladesh or Pakistan or Sri Lanka. So we should produce large quantity of cement so that we can fulfill the needs of Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan in the infrastructure development of their country also. And in that way, we will earn some foreign exchange. And already there is decontrol of price, which means that the cement industry is free to compete with any other countries of the world. Yeah. Some other policy reforms that were introduced in the cement industry is related to the capacity. Suppose there are large cement plants. Suppose they produce 1 million tons of cement per year. So the capacity of the cement plants were also upgraded and increased. Then the process and technology and production. There was improvement in the processing of cement, technology needed to manufacture good quality cement. All right, there are some categories of cement, and there are कंक्रीट का अलग फॉर्मूला है, ऐसे सीमेंट का अलग है ना, आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट है, आरसीसी सीमेंट है. So likewise there are some technologies needed to categorize the quality of cement and their production distribution also. Now if we want to export it to other countries, we should also try to create the internal demand. Internal demand for cement can be increased with the infrastructure projects. कहीं पे एयरपोर्ट बनना है तो बहुत सारे सीमेंट का जरूरत होगा. आजकल हाईवे में भी जो है लेन डिवाइडर है, हाईवे में भी आजकल जो है ट्री प्लांटेशन हो रहा है. और बहुत समय में क्या होते हैं, कुछ सिटी के अंदर में जहां बार बार पानी से रास्ते खराब हो जाते हैं, तो वहां पे भी कंक्रीट से जो है ढलाई कर दे रहे रास्तों को. जहां रोड रोलर जाना पॉसिबल नहीं है गांव में या छोटे नैरो लेन्स में, इफ रोड रोलर्स आर नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग, देन द कंक्रीट हाईवेज, कंक्रीट रोड्स आर द बेस्ट अल्टरनेटिव. तो जहां रोड रोलर नहीं जा सकते हैं वहां पे हम ढलाई करके रास्ते बना दे रहे हैं. So the demand for domestic demand for cement has also increased, and it needs to be increased further through residential complex, multi-purpose projects, more and more dams, more and more commercial establishments. And then definitely there is a demand. If there is scope of profit, the industries and their expansion is possible. Next category of industry is automobile industry, and the purpose of automobile industry is started to supply the goods and services quickly from one place to another. As the population of our country is very big, the everyday requirement of goods and services is also of very vast size. Hence, there is a great scope for the automobile industry to flourish in our country. What are the types of automobiles? Basically, trucks, buses, cars, then motorcycles and scooters, then multi-utility vehicles are there, and all-terrain vehicles are there, three-wheelers are there. Now battery operated also e-rickshaw and electric cars and electric operated vehicles. All right, EV, electric vehicles, are in the queue. All right, so all of them have a great scope in a vast country like India, where the day-to-day requirement to transfer or to transport goods and services is very necessary. Now we will learn about simply the important centers of automobile production. Pune is there, Lucknow, Chennai, Gurgaon, Faridabad, Delhi is there, Jamshedpur, Mumbai, Kolkata, Indore, Hyderabad. Likewise, there are so many towns, very many big cities in our country which are centers of automobile manufacturing. All right, so almost this industry is in the
days to come, we will see more and more of automobile industries. Then the garages, the showrooms, the users are increasing. So the services to the people will also increase, and hence it is a upcoming in sector of our country. Now, one question comes, why automobile industry has shown a quantum jump in the past 15-20 years? तो ये क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ पिछले 15-20 साल में बहुत ज्यादा देखे गए हैं, वो क्यों? Any idea from my students? Sir, because it provides a very large number of people employment. एक तो हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और कुछ? क्या लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है? Does the population can afford to purchase a car or motorcycle or a scooter? Yes, sir. Okay, so employment has increased, income has increased, and the people can afford automobiles personally. All right. क्या कुछ और भी हुआ है इंडिया में? पॉलिसी रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन हुआ, वेयर वी कैन एक्सपोर्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड वी अलाउ कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Hero and Honda, they manufactured the Hero Honda together. Bajaj and Kawasaki, two companies jointly manufactured motorcycles and scooters. Maruti and Suzuki is there, isn't it or not? So jointly, one Indian company and one foreign company has started manufacturing cars in our country. Then there are exclusive foreign brands like Ford is there, Hyundai is there, who are selling their products directly as a competitor. Without collaborating, they are manufacturing their cars and they are selling it in the Indian market. So these policy decisions have allowed foreign investors to come and start business in our country. And in the meantime, the purchasing power, the skill, then the necessity to own a private vehicle has also increased. All right. So why the automobile industry has shown a quantum jump? Then we can write down the points that the employment, the scope of employment is there, income is there, standard of living can be raised. The people have enough purchasing power to own a private car or motorcycle. Then the skill of the people has improved. They can drive, and the necessity to move from one place to another has also forced them to own a vehicle. Right? People want to go to their job or marketplace or to any other place of their interest on their own personal vehicles. They are choosing their own vehicle than the public means of transport. But at present, we want to discourage the use of private vehicles, and we should go for carpooling, or we should conserve the fossil fuels. We should also reduce the pollution that is created by the automobile exhaust. So these are the new concerns, and which we are already very worried, and some steps already has been taken to discourage the use of personal vehicles. And many students also learn to drive the motorcycles, and without any objective, they are simply wasting the fuel and their valuable time also. So discouraging the use of personal vehicles is much needed at present. But the industry also hopes that meaningful and purposeful use of the automobiles and sensitive use of the automobiles, taking care of sustainable existence, sustainable living practices should also continue.
Is there any relation between automobile industry and steel consumption or iron and steel consumption? क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए क्या आयरन एंड स्टील का जरूरत पड़ता है? Yes, sir. Yes, sir. और भी क्या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल के लिए? Yes, sir. हेडलाइट है, स्टीयरिंग है, अंदर में इंटीरियर में सीट है, टायर है, विंडशील्ड है, डोर हैंडल है। तो क्या एक ऑटोमोबाइल कंपनी अकेले सारे प्रोडक्ट बनाएंगे या वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपने आसपास के छोटे इंडस्ट्रीज से, वो जो है आउटसोर्स करा ले? किसी को बोल दिया बल्ब बना लो, किसी को बोल दिया टायर एंड ट्यूब बना लो, किसी को बोल दिया अलॉय व्हील डिजाइन करो, किसी को बोल दिया कि सीट कवर बना दे, डिजाइन कर दे। तो इन दैट वे द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूजेस असेंबली लाइन टेक्निक वेयर engines, connections, the chassis, the motors, the tires, the axles, the gears, the transmission, all these things are manufactured at different places and they are assembled at one place finally. It means lot of parts are brought from several other industries and they are assembled finally and then the car is manufactured. तो यहाँ पे कोलैबोरेशन, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है एक साथ मिलके एक सिंगल कार को कंप्लीट करते हैं। एंड दैट इज व्हाई द प्राइस ऑफ single car is about 5 lakh, 10 lakh or 15 lakh, 20 lakhs, and it can amount to 5 crore, 10 crore like that also in Indian rupees. Okay. And it also says the engineering supremacy. It tells about the engineering skills and engineering supremacy. There is fight for engineering supremacy also. Who produces the best car, the best and the fastest? So there is always a competition among the manufacturers to design and to have the best in utility, best in speed, best in performance. All right. And many of you have seen a lot of advertisements also related to their automobiles. So companies boast about their styling, about their performance, about their features. All right. And mind it, another thing that the automobile industry has not only fulfilled the necessity, now it has presented the car as a prestigious or luxurious item. अभी जो है एक कार रखना एक प्रेस्टीज का मैटर हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया है. So that kind of sentiment, that kind of reservation among the people is also there. कौन से कार लेके घूम रहे हैं ये भी डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेजर करने का एक आज के डेट में तरीके हो गए हैं. तो आज के डेट में if you have a car and which car you are driving, how many car you have replaced in 1 year or 2 years or 5 years, that also estimates the status and standard of living. So we have just now finished the automobile industry and we have learned several perspectives how the automobile industry is no longer a necessity and now it is a luxury, it is a status symbol for the people, and more and more people want to show their status by purchasing a car or motorcycle. And the next segment is information technology and electronic industry. So we are doing the online classes. Without information technology and without electronic gadget, the online classes will not be possible. So the technology related to sharing and manufacturing or making information has gone a long way. So we remember that people learned language, they are spoken at home, they are spoken in the society, they have made the subject, they have made the schools, colleges, institutions just to learn religion, just to learn poem, just to learn the verses. And now all the same things of our learning has been using some devices related to sharing
of information, and those electronic devices are, now we will write mobiles, laptops, mobiles and laptops. All right, and you can write about fax, you can write about telephones. What are the technology? You can write about email, you can write about any other social media. Social media is there, and you can write about some other technologies related, audio, visual. Audio visual technology means recording of a video and sending it to people all over the world. And email is there, social media is there. What are the social media? Facebook is there, and Twitter is there. Twitter, Facebook, Instagram. It suggests that there is endless possibilities related to this information technology and IT industry. So they are going to occupy the prime attention in the days to come. And already in the past 2 years, the digital platform has shown maximum growth and maximum users all over the world. So schools are entirely going to be dependent on this kind of digital platforms. So what is the use of IT industry? Planning, designing, sharing information, space research, weather forecast, live broadcast, entertainment, research, adventure, so many things are there which now uses information technology and electronic devices. क्या क्रिकेट में लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसमें थर्ड अंपायर डिसीजन क्या टीवी रेफरल से दिया जाता है? यस सर। थर्ड अंपायर कभी कभी रनआउट को या स्टंपिंग को या एलबीडब्ल्यू को जो है वो टेक्नोलॉजी के सहारे डिसीजन लेते हैं। आंसर इज यस सर। तो क्या होता है, बॉल ट्रैकिंग एक सॉफ्टवेयर है, जो बॉलर बॉलिंग किए हैं वो लाइन में है कि नहीं, स्टंप हिट करना है कि नहीं, उसका बाउंस कितना है, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया गया है। और वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी आउट होने के है या नहीं है, और थर्ड एम्पायर को वो हम लोग जो है मदद करते हैं। तो देखो एक खेल में भी टेक्नोलॉजी का आज के डेट में कितना इस्तेमाल हो रहा है। स्कोर बोर्ड, बैट्समैन का रन, बॉलर कितने रन दिए हैं, और जो है टीम टोटल कितना है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, और बैटिंग टीम और फील्डिंग टीम का कंपैरिजन हो जाता है। तो ये सारी चीज जो पॉसिबल है हमको जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, क्या तुम लोग स्पाइडर कैम के बारे में जानते हो? आजकल स्टेडियम में जो है वो ड्रोन्स जो है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऊपर से स्टेडियम का पिक्चर लेके दिखाते हैं, पूरा फील्ड दिखा देते हैं, है ना। और जो है ये हॉटस्पॉट कैमरा होता है, उसमें पूरा डार्क इमेज होता है, और बैट्समैन मान लो बैटिंग कर रहे हैं और एज लगा है कि नहीं, अल्ट्रा एज भी दिखाते हैं, और हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी से व्हाइट स्पॉट हो जाता है बैट में। तो गर्ल्स पता नहीं, बॉयज जरूर जानते हैं कि नए नए कौन से टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं स्पोर्ट्स में। गर्ल्स भी जानते हैं, वेरी गुड। और क्या स्टंप में भी कैमरा लगे हुए हैं? यस सर। क्रिकेट का स्टंप में भी कैमरा लगा हुआ है। ओलंपिक देखे हो? ओलंपिक में मान लो एक साथ 50 स्टेडियम में इवेंट हो रहे हैं, स्विमिंग हो रहा है, बॉक्सिंग हो रहा है, एथलेटिक्स हो रहे हैं, तरह तरह के ओलंपिक इवेंट्स हो रहे हैं। तो देख लो कितना उसमें जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अनाउंसमेंट होता है प्लेयर का कि अपना इवेंट से पहले रेडी हो जाए, उनको कॉल मिल जाता है, वो अपने फील्ड में पहुंच जाते हैं, और उन लोगों का परफॉर्मेंस के बाद गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वो भी रिकॉर्डेड हो जाता है, सबका पोजीशन रिकॉर्ड हो जाता है, सबका टाइमिंग भी रहता है क्या,
अगर एक एथलेटिक्स में एक 100 मीटर दौड़ रहा है तो सबको अपना टाइम मालूम चल जाता है कितने टाइम में फिनिश किए हैं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कैसा घड़ी होगा जो 10 प्लेयर का टाइम को नोट कर लेते हैं? Stopwatch. स्टॉप वॉच को कौन ऑपरेट करता है? या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो वहां पे कुछ लेजर गाइडेड वॉच है जिसमें वो एथलीट के बॉडी से रिफ्लेक्ट होके वो स्टॉप हो जाता है और नेक्स्ट पर्सन का भी जो है वो टाइमिंग को वो रिकॉर्ड करने लगता है। तो 100 मीटर अगर 10 जन दौड़ रहे हैं तो 10 का टाइमिंग जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी स्प्लिट दिखा देते हैं। So this is the extent and possibility of the digital and electronic industry. तो डिफेंस में भी क्या यूज होता है? क्या इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर में टेंशन है तो उनको खबर मिल जाता है कि हमको मदद चाहिए और ऐसा प्रॉब्लम है और हमको तुरंत जो है वहां मूवमेंट होना है? Yes, sir. Yes, sir. क्या स्पेस में भी है हमारा कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए सैटेलाइट है और सिग्नल्स को भी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। वेदर फोरकास्ट, साइक्लोन आने वाले हैं कि नहीं, और कोस्टल एरिया में वार्निंग भी जनरेट हो रहा है। टीवी न्यूज से पता चल जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे सेलिब्रेशन किस तरह होना है, Yes, sir. प्रधानमंत्री Yes, का sir. भाषण कब आना है, और अलग अलग चैनल जो है अलग अलग हमेशा कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री बना के प्रेजेंट करते रहते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। आज के डेट में बिना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट भी सक्सेसफुल नहीं है। Isn't it or not? So there are wide range of application and possibilities related to the information technology and electronic industries. एजुकेशन में, लाइव ब्रॉडकास्ट में, एंटरटेनमेंट में, है ना। जितने टीवी चैनल है तुम्हारा, टीवी में जितने चैनल है सब में किसी ना किसी को नौकरी मिला है, और जितने प्रोग्राम्स बनते हैं वो भी पॉपुलर होते हैं। सो देयर इज वास्ट स्कोप। That much for today. 2 industries are already committed. It will now disconnect itself on its own. Bye bye to all of you. सर हाँ, सर सर हम लोग का कॉपी सर आप सबमिट